Hello everyone, today in this video we will read the second poem of class 12, An Elementary Classroom in a Slum from Flamingo book composed by Stephen Spender. So first of all we know about Stephen Spender. Stephen Spender born in London on 28th of Feb 1909 and he was died 16th of July 1995. Spender was an English poet, novelist, and a dramatist. Spender poems theme of based on social injustice and the class struggle in his work. And this poem, An Elementary School in a Slum, the poet expressed the bad condition of poor children living in slum. In this poem, the poet wants the life of slum children be completely changed. Poet wants their poverty to end. He wants to be bright and fulfill of hope and their future. And poet also wanted the rich people or government visitors will have to do more for them. They solve their problem of poverty, illiteracy, and a backwardness. So, in this poem, the poet describes injustice and the struggle in the slum areas, children and people. So, now let's start the poem. Far, far from gusty ways, these children's faces, like rootless weeds, the hair tore round their pallor, the tall girl with her weights down hat and paper seemed boy. So, first three lines, the poet describes the children who study in an elementary school in slum area. The poet says that the faces of children are dull, without energy. They are not full of energy like their or other kids of their age. These full of energy, these children like unwanted weeds which grow on own in the fields. Their hair is not neatly done and falls off their pale faces. They haven't combed their hair. And now the poet describes pale faces. They haven't combed their hair. Poet describe a tall girl who seemed to be suffered by poverty. Her head is down, maybe because of tiredness or sameness. So first three lines, the poet expressed the problem of slum areas. Children, they looks like a रूटलेस वीड्स दैट मीन्स वो चीज़ वैसे एक खरपतवार जैसे वो दिख रहे हैं, जैसे कि जो जंगली घास होती है या वैसी घास जिसके लिए हमारा कोई यूज़ नहीं होता उसको हम निकाल के फेंक देते हैं, वैसे वो बच्चे दिखाई दे रहे हैं. देयर फेसेस आर डल विदाउट एनर्जी. उनके चेहरे पे किसी तरह की कोई एनर्जी नहीं है. लाइक अदर किड्स ऑफ देयर एज. जो उनके एज के जो बच्चे हैं उनके चेहरे पे जो जीलनेस, जो एक ग्लो दिखाई देता है, वो ग्लो उनके चेहरे पे दिखाई नहीं दे रहा है. Now, and the hair tore round their pallor, and their hair is not neatly done and fails on their pale face. उनके बाल अच्छे से बने हुए नहीं हैं, उनके मुरझाए हुए चेहरे पे. pale face that means dull face. pale face में उनके वो बाल जो है नीचे को गिरे हुए हैं. their hairs completely dry, unnourished. पूरी तरीके से ड्राई है, अननरिश्ड है. जैसे आपने देखा होगा कि जो बच्चे स्लम एरियाज में रहते हैं, जो रैकविकर्स होते हैं, उनके हेयर को आपने नोटिस किया होगा. Same as. And now the tall girl with her weights down had the paper seam boy. Now the poet noticed another girl. She was a tall girl who seemed to be suffered by poverty. Her head is down, maybe cause of tiredness or sameness. तभी जो पोएट हैं वो एक लंबी सी लड़की को देखते हैं. Her head down, cause of tiredness और सेमनेस. सी इज़ फुल ऑफ सफर्ड पॉवर्टी. वो लड़की जो कमज़ोर सी है, नीचे अपने सिर को झुकाए खड़ी है, या उसके सिर झुकाने को या तो टायर्डनेस बताया गया है या फिर उसकी शर्म बताई गई है. सी सफ़र्ड फुल ऑफ पॉवर्टी, जो कि पूरी पॉवर्टी से सफ़र कर रही है, परेशानी से सफ़र कर रही है. नाउ द पेपर सीम बॉय विथ रेड्स आइज, द स्टर्न अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्ट बोन, रिसाइटिंग अ फादर्स ग्रेन डिजीज. His father's grain disease.
his lesson from his desk at back of the dim class, and unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel games in tree room other than this. Now next, after the girl, the poet noticed another boy. The poet said, the boy who is so weak and thin that he has been like a paper seed. एक कमजोर सा बच्चा उन्होंने देखा जो एकदम पेपर सीट की तरह पतला था. Boy's eyes reflected, greened and wanted to achieve everything. लेकिन कमजोर होने के बावजूद भी उस बच्चे में जो है एक जीलनेस, एक अचीवमेंट दिखाई दे रही थी उसकी आंखों में. Poet says this boy is the unlucky. Now poet says the boy is unlucky because he inherited a disease from his father. He has received a disease in हेरिटेज. अब वो बोलते हैं कि वो बच्चा जो है अपने पिता की ही बीमारी को लिए हुआ था या आने वाले टाइम पे अपने पिता की ही बीमारी से क्या होगा, वो सफ़र करेगा. एंड बिकॉज ही वॉज वेरी थिन एंड ट्विस्ट बोन्स, उसकी बोन्स जो है मुड़ी हुई थी, कमज़ोर सा था. एंड ही सफ़र्ड मल न्यूट्रिशन, वो एक मल न्यूट्रिशन जो होता है कुपोषण से ग्रस्त था, ऐसा वो दिखाई दे रहा था. नाउ नेक्स्ट, his lesson from his desk at back of the dim class, and unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrels game in tree room other than this. Now the poet noticed another boy. A disabled boy is sitting on his bench and learn his lesson. तभी पोएट की नज़र एक किनारे में बैठे एक बच्चे पे पड़ती है जो कि अपने लेसन को लर्न करता है. At the back of the color in dim darkness area was a small boy who was not visible to the poet as he was sitting in darkness. वो बच्चा इस तरीके से रूम के किनारे में बैठा हुआ था कि पोएट उसको स्टार्टिंग में नोटिस नहीं करता है, लेकिन बाद में उसको नोटिस कर लेता है. Unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream. Now when the poet noticed him, then he saw one thing into his eyes. The poet could see his eyes, which were bright and full of dream. He was watching rather interest in playing with squirrel in the tree's home. वो देखता है कि इस बच्चे की आंखों में, किनारे बैठा हुआ है लेकिन उसकी आंखें जो हैं ड्रीम से भरी हुई हैं, कुछ सपने उसकी आंखों में हैं. एंड ही enjoyed the squirrels game. वो जो आउटसाइड फ्रॉम द क्लास, जो क्लास से बाहर जो एक पेड़ पे उसको एक स्क्वायरल दिख रही थी, वो बच्चा उसको बहुत इंजॉय करता है और उस स्क्वायरल की ही तरह वो भी अपनी लाइफ को जीना चाहता है. सो इन फर्स्ट स्ट्रेंजर द पोएट डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ स्लम चिल्ड्रन, their achievements, their dreams, their malnutrition, their dry hair, a paper sheet skin, and all things. Now the next stranger. Now on sour cream walls, donations, experts had cloudless ad drawn, civilized dome, riding all cities, built flowery, toilets valley, open-handed map, awarding the world's its worlds, and yet from these children, these windows, not this map, their world were all their futures painted with a fog. A narrow seat sealed in with a lead sky, far, far from river, caps, and stars of words. Now the next stanza poet described the wall of the school. The first stanza poet described the condition of slum areas children. Now the next stanza poet described the wall of the school. They are cream in a color like the color of the sour cream. That means the wall are not cleaned. They haven't been painted recently. Room walls are covered with different charts and the pictures must donated by the different people. अब जो रूम है, क्लास रूम के बारे में बात हो रही है, वो कैसा है, एकदम डल कलर का है. दे हैवेंट नॉट बीन पेंटेड रिसेंटली, उसमें अभी नया कलर नहीं हुआ है. एंड द वॉल्स आर नॉट क्लीन, वो अच्छे से क्लीन नहीं है. एंड द रूम वॉल्स आर कवर्ड विद डिफरेंट चार्ट्स एंड द पिक्चर्स. वो जो वॉल्स हैं वो डिफरेंट चार्ट्स और पिक्चर्स से क्या हुई हैं,
कवर की गई है। अ पिक्चर ऑफ द शेक्सपियर ऑन द वॉल, एक शेक्सपियर की पिक्चर जो है वहाँ पे लगी हुई है। सो पोएट सेज द ऑल पिक्चर्स एंड द मैप्स एंड द इमेजेस यूजलेस फॉर देम, सारी की सारी पिक्चर्स और जो इमेजेस हैं वो उनके लिए यूजलेस है। नाउ built flowery Tulses Valley open-handed map what the world its world. Now the poet says, at the time of the daybreak, the sun is rising at the horizon and the half circle. अब दिन का समय है, मिड डे का टाइम है, सन जो है हॉरिजॉन्टल है, सीधे हमारे आसमान बीच आसमान में है और हाफ सर्किल में है। इट सीम टू बी बिहाइंड ऑल द सिटीज, जो कि शहर जो है उसके पीछे, शहरों के पीछे वो दिखाई दे रहा है। Now the poet says this is a picture of the Tulsi Valley which has beautiful flowers. अब वहाँ पे एक जो है टॉल्सी वैली की पिक्चर भी लगी हुई है दीवार के ऊपर, जहाँ पे सूरज की थोड़ी सी रोशनी पड़ रही है। So the poet says this is the image of the map which help all in the own way. अब वो जो मैप है, एक मैप भी वहाँ पे लगा हुआ है जो कि बच्चों को कुछ अलग चीज़ें दिखाने के लिए लगाया गया है। But these children's the map, the world useless for them because the slum where they live in different from shown of the on the map. अब जो मैप लगा हुआ है वो उनके लिए अनयूजफुल है, वो यूजफुल नहीं है, उनके लिए यूजलेस है। तो और जो जिस जगह वो रह रहे हैं उस जगह को भी वो मेंशन नहीं कर रहा है। So poet said the world map useless for them because the slum where they live in different from shown on the map. क्योंकि उनका एरिया जो है उस मैप से काफ़ी डिफरेंट है। उस मैप में जो एरिया दिखाए गए हैं उस एरिया से जो है उनका एरिया काफ़ी डिफरेंट है। दैट्स वाई द एवरीथिंग यूजलेस फॉर देम, इसीलिए वो मैप वगैरह उनके लिए यूजलेस है। देयर वर्ड ओनली वर्ड दे सीन आउट ऑफ द विंडो, उनके लिए केवल वही उनकी दुनिया है जो कि उनको विंडो से बाहर दिखाई दे रही है। Now were all the future painted with a fog that means fade, a narrow street sealed in with a lead sky far from rivers, caps and the stars of the words. Now the next four lines poet said their future is compared to a narrow street, which means that there is no scope available for their future growth. These children are far away from the light of knowledge and the education. Now the next line, the poet says their future is full of darkness. उनका future जो है पूरे darkness में जा चुका है, foggy हो चुका है, fade हो चुका है। And the poet compared their future to a narrow street, which means that there is no scope available. और poet जो हैं उनके future को narrow street से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि उनका फ्यूचर उस तंग गलियों में कैसा होगा जहाँ पे सूरज की सही से रोशनी भी नहीं पड़ पाती है। एंड देयर फ्यूचर एंड नॉट नो स्कोप अवेलेबल फॉर देयर फ्यूचर, उनके फ्यूचर के लिए वहाँ पे कोई स्कोप भी अवेलेबल नहीं है। बिकॉज दे लिव इन स्लम एरिया, इट्स वेरी कम्प्लीटली डर्टी एंड द बैकवर्ड एरिया, दैट्स वाई देयर having no scope available for their future. The children are far from द लाइट ऑफ नॉलेज एंड द एजुकेशन, और वो बच्चे जो हैं लाइट और एजुकेशन से काफ़ी दूर हैं। उजाला, रोशनी, ए ग्रोथनेस, लिटरेसी, इन सब से जो है वो काफ़ी दूर है। सो फार फ्रॉम रिवर्स दैट मीन्स नॉलेज, कैप्स एजुकेशन एंड द स्टार्स रिप्रेजेंट लाइट। तो एजुकेशन से, एक नॉलेज से, नाउ रिवर रिप्रेजेंट नॉलेज है, कैप्स एजुकेशन एंड द स्टार्स लाइट, तो इन सब चीज़ों से वो काफ़ी दूर हैं। सो नाउ द पोएट डिस्क्राइब द लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम एंड द स्टूडेंट्स वहाँ पे रहने वाले स्टूडेंट्स के बारे में बहुत सारी बातों को डिस्क्राइब करते हैं। आई होप सो यू अंडरस्टैंड टू स्ट्रेंजर, एंड नेक्स्ट टू स्ट्रेंजर आई विल टीच यू टुमारो। थैंक यू।